Bull versus bear market. What's the difference? Welcome back to the second episode of A to Z of Finance with Kotak Securities. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एसेट एलोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है while planning our investments and how it can help minimize risk. एक बार हम अपने एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का प्लानिंग कर लें, the next question that comes is, when should one invest in the market? Is there a right time to enter the market? इसी चीज को आज हम देखेंगे by understanding two most used terms, bulls and bears. ये दो टर्म्स इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं टू रिफर टू मार्केट कंडीशंस. दे डिस्क्राइब स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है इन जनरल, दैट इज वेदर शेयर प्राइसेस आर अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग इन वैल्यू. यूजुअली जब मार्केट बेरिश हो जाता है तब देयर आर मोर सेलर्स देन बायर्स, क्योंकि मोस्ट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अपना लॉस मिनिमाइज करने और ज्यादा लॉसेस से बचने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं विद अ फियर दैट अगर मार्केट ज्यादा गिरा तो उतना ही लॉस उनका बढ़ेगा. सो एज एन इन्वेस्टर इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कौन से मार्केट कंडीशन की वजह से मार्केट कौन से डायरेक्शन पर रिएक्ट करेगा, सो दैट वी कैन प्लान आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड बी रेडी फॉर वेरियस सिनेरियोज. Characteristics of a bull and bear market. Now let's take a closer look at bullish and bearish markets and which factors play an important role to set a trend. Investor psychology. Individual behavior बहुत ही important role play करता है in the market. We can say that the stock market performance और investor psychology एक दूसरे पे mutually dependent है. The market's behavior is impacted by how individuals perceive and react to a particular piece of news or information. In a bull market, investors willingly participate in the hope of obtaining a profit, whereas during a bear market, the sentiment is negative. इस negative sentiment की वजह से investors start selling or taking their money out of the market because उन्हें market पे भरोसा नहीं रहता. This results in a chain reaction and cumulatively, the market enters into a bearish mode. Change in economic activity. ये पॉइंट समझने के लिए हम एक recent example लेते हैं, the Russia-Ukraine war. इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में काफी गिरावट हमने देखी. ऑयल प्राइसेस 14-year हाई टच कर गए थे एंड एट द सेम टाइम द रशियन करेंसी रूबल प्लंज्ड इन वैल्यू टू हिस्टोरिक लोज. गिवन सच ग्लोबल अनरेस्ट, ऑलमोस्ट सारे रेटिंग एजेंसीज लाइक इक्रा, इंडिया रेटिंग्स, ऑल ऑफ देम इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर डाउनग्रेड किया, साइटिंग द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर. Such negative economic developments have a direct effect on the stock market. Bear market usually weak economy के साथ associate होता है. Most of the businesses कम profits दिखाते हैं या profit record ही नहीं कर पाते because consumer के पास purchasing power नहीं रहता and hence they spend less. This decline in profits directly affects the way that the market values stocks. For example, the 2008 housing bubble and then the financial crash. Bull market is the reverse. People have more money and they're willing to spend more. One thing leads to another and it results in higher profits for the corporates and hence ultimately their shares do well. So in conclusion, bull markets are the result of good corporate numbers, economic development, low unemployment, less inflation, etc. etc. Whereas weak economy, high inflation, poor company performance, high unemployment, वो सब bear markets के sentiments हैं. A popular example of a bear market is when the COVID-19 pandemic hit us in March 2020. The markets collapsed suddenly. So to conclude, market एक specific event पे dependent नहीं होता. रातों रात market bullish या bearish नहीं बन जाता. It's more of a long-term performance concept where various different factors come together to set out a trend. Small movements तो short-term trends या market corrections भी हो सकते हैं. Whether or not market bullish या bearish trend करेगा can only be determined over a longer time period. ये सारे sentiments को analyze करके आप अपनी investment strategy accordingly decide कर सकते हो. And keep in mind one important fact. Over the long term, the stock market has always given a positive return. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.